NSDC's eSkill India has joined hands with American India Foundation for enhancing employability skills and providing career guidance to college students through its course Essential Employability Skills for Indian Youth. You can follow 4 simple steps to enroll in this course. Step 1. Log in or register yourself on eSkill India portal. To enroll in the course, click on the above banner on eSkill India portal. The banner will appear on the eSkill India main page. In case banner is in motion or not visible, you can click on the corporate training button available to reach the NSDC AIF training program. If you have registered yourself before, you can log in and continue. But if you are a new user, click on sign up, fill all the details. You will need to verify your phone number or email ID. Once verified, click on I agree to terms and conditions. You have now completed the registration process. Now you can log in and enroll in the course. Step 2. Enter coupon code. After you have logged in, enter the coupon code and click submit. Step 3. Select course and language. The course is available in 2 languages. To do the course in English, click here. Kindly remember, you will not be able to change the language of the course after enrollment. Select the language of the course carefully. Click on Enroll. Click on OK. Step 4. Go through all the modules and clear the final exam to earn any certificate. After completing all the lessons in each module, you will have to give final assessment. Completing the final assessment is mandatory to complete the course and earn certificate. To give final exams, click on Final Exam. Each candidate will be given 3 attempts to clear the exam or improve the final score. The best score out of the 3 would be displayed on e-certificate. Now click on Quizzes. Click on Take Quiz and complete the quiz. तो वर्कशॉप को स्टार्ट करते हुए मैं आपको फर्स्ट बताना चाहूंगी कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन क्या है. Then we'll move towards career counseling of the small employability skills and everything we'll be talking further as the PPT goes. So starting with American India Foundation, एक NGO है, it's a non-government organization that works toward the uplifting and it works toward improving the condition of India's underprivileged women, children and youth. So ये women, children और youth के पे ज़्यादा focus करती है ये organization. They work towards the empowerment of them and works towards better their condition. So till date, AIS has successfully impacted over 6.7 million lives in India. So American India Foundation, in association with Dell Technologies, University of Mumbai, and NSDC, that is National Skill Development Corporation, they launched the project of Future Ready. तो ये जो project है Future Ready वो क्या है, उसका main aim क्या है और इस workshop से इसका क्या लेना देना है. So the project Future Ready, इसका जो main aim है, it aims to enhance the employability skills and providing career guidance to students of colleges. Basically, its main aim is to make the future workforce ready and also to inculcate entrepreneurial mindset. So that is why we all have gathered here and we are conducting this workshop so that you guys be future ready and can foresee what are the challenges and changes that are going to be introduced and coming in the future workforce and work environment and employability norms. So to start with, अभी आप लोग IT फील्ड से हो, काफी जन FY, SY and TY में, राइट? मैक्सिमम आप कौन से ईयर मैक्सिमम FY के बच्चे हो कि SY के बच्चे हो कि TY के बच्चे हो? Do I have any answers, Sayita? FY. Okay. ओके तो आप लोगों ने आईटी आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो आप आई एम श्योर कि जब आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे थे आप लोगों ने बहुत सोचा होगा. आई एम श्योर कि आपने शायद जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं वही कर लूं, ऐसा आपने होपफुली यू हैवंट थॉट दैट एंड यू हैव एंडेड अप डूइंग दिस. I believe that you guys might have went into a lot of research, have went into a lot of thought process, have thought a lot.
सोचा होगा कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, एंड देन यू गाइस हैव सिलेक्टेड IT. So what I believe is that आप सब मुझसे agree करोगे कि career planning is one of the most important decisions that you guys had ever taken, and it literally impacts every life part of your life. Correct? अभी आपने जो अपना field select किया है वो आपके आने वाले हर एक लाइफ के फेज को काफी इफेक्ट करेगा, as then your life will change and more according to the career decisions you guys have taken. So it's very important when you move further from whatever level you guys are at. As मेरे को किसी ने कहा कि आप SY में हो, तो TY के बाद if अगर आपको फर्दर एजुकेशन करना है, कुछ हायर डिग्री लेना है या फिर आपको जॉब करना है, ये कुछ चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट होती है बिफोर यू एंड अप सिलेक्टिंग कि आपको कौन से जॉब करना है या किस तरीके के जॉब प्रोफाइल में आप जाना चाहते हो. ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जानो. So today I am going to discuss about those things which is very important. So first, there are 4 important components of career planning: to know yourself, second is to have explore your options, third is to remain focused, and fourth is to have a right action plan. तो मैं जब बोलती हूँ कि to know yourself is the first component of career planning, I would like that you guys notice and mark this point that self-assessment or know yourself is the most important component of career planning. Know yourself में basically आप समझने की कोशिश करते हो कि आपके खुद के strengths क्या है, आपके weaknesses क्या है, आपके likings क्या है, आपके dislikes क्या है, आपके interests क्या है, कौन सी चीज करने में आपको ज्यादा खुशी मिलती है, कौन सी चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो. Because only and if you understand what are your strengths and liking, you will be in a better position to understand कि कौन सा job profile आपको suit करेगा. Because I am sure कि at the end of the day आप ऐसा एक job नहीं करना चाहते जहाँ पे आप खुश नहीं. आप एक ऐसा job करना चाहते हो जहाँ पे आप खुश हो, आपको मजा आए वो करने की. You wake up to every next day and be willingful to get up and go to the job. Not like कि अरे यार आज वापस जाना पड़ेगा, वही घिसी पिटी जिंदगी. सबकी घिसी पिटी जिंदगी होती है, बट एक मजा रहता है आपको, आप एक enthusiasm रहता है. In order to have that enthusiasm throughout your life and to have a good flourish career, it is important that you know yourself, you have a proper understanding of your strengths and weaknesses, so that it helps you to understand ki okay, according to these strengths this job profile will best suit you. Coming towards the next step, एक बार आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, आपने फिगर आउट कर लिया कि आपके लाइकिंग्स क्या है, आपके डिसलाइक्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, हम हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाएंगे या फिर स्टेप 2 की तरफ जाएंगे. दैट इज टू एक्सप्लोर ऑप्शंस. अभी एक्सप्लोर ऑप्शंस क्या होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने अपना 10th कंप्लीट किया, उसके बाद आपने ऑब्वियसली सोचा होगा ना कि आर्ट साइंस कॉमर्स के साथ भी और क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. अगर हमको आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स लेकर हम आगे क्या क्या कर सकते हैं. अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं 11th-12th के लिए, तो कॉमर्स के साथ तो कौन से वेरियस अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास. अगर मैं साइंस ले रही हूँ तो मैं जरूर रिसर्च करने की कोशिश करूंगी कि एक बार जब मेरा 12th हो जाएगा विद डूइंग माई साइंस, में क्या क्या वेरियस अपॉर्चुनिटीज है मेरे सामने करने के लिए, और उन सारे ऑप्शंस में कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा करने में पसंद आएगा या फिर कौन सी चीज करने में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. Hence it is very important कि आप थरो एक अच्छा रिसर्च करो बाहर मार्केट में कि कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मेरे स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा सूट करेगी, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी या कौन सा industry will best suit my personality, my interest, and will complement my strengths, so that in order आप एक so in order that you could have a good career line structured for yourself. So it is very important कि आप अपने strengths and weaknesses को अच्छे से समझें.
सेकंड, आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और पर्सनालिटी के हिसाब से आप एक अच्छा रिसर्च करें कि मार्केट में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, कौन सी ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन बाहर है मेरे पर्सनालिटी और मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मैं ले सकती हूँ, दैट आई कैन पिक अप, दैट आई कैन कंटिन्यू विद। एक बार आपने सेल्फ असेसमेंट एंड एक अच्छा रिसर्च कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली टू सेटिंग गोल। ना आई बिलीव कि अगर आपको फोकस्ड रहना है, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप गोल सेट करो। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अगर आप गोल सेट नहीं करते, आपके पास वो जील, वो एंथुजियाज्म, वो मोटिव नहीं रहता है वो गोल को पूरा करने के लिए। करेक्ट, आई होप दैट यू गाइज विल अग्री विद। अगर आपको अगर आपने फिनिशिंग लाइन नहीं, एक बाउंड्री या एक फिनिशिंग लाइन नहीं बनाई, तो आपके पास फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने का कुछ एंथुजियाज्म ही नहीं रहेगा। वो फिनिशिंग लाइन पहुंचकर आपको क्या मिलेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। ओनली एंड देन you will be remain motivated and focused. So it is very important that you set a goal for yourself so that you take appropriate steps towards reaching and completing that goal. The next step is obviously to have an action plan. Okay, तो आपने एक बार अपना गोल सेट कर लिया, तो आप गोल सेट करके भूल जाओगे नहीं, राइट? आप प्लान करते हो, आप स्टेप्स लेते हो कि मैं इस गोल्स को कैसे पूरे कर सकता हूँ। अभी आप सब लोग अपनी एसवाइज में हो, you will be promoting and you will be doing you will be after your exams, and so you'll be passing out and you'll be moving up to the last ladder of your college life. That's your TY. Uske baad, whatever, if you choose to do job or higher education, I would like you guys to remember this fact with the prospects of job and employment. Gain experience. ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितना भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो ऑन ग्राउंड, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लो। बिकॉज कोर्सेज में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कभी करना है। बट इट्स ओनली एंड व्हेन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो एंड यू एक्चुअली वर्क इन अ वर्क स्पेस, यू विल प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें जो मुझे सिखाई गई है उसको एक्चुअली में उसको अप्लाई कैसे करना है। And mind me, there is a vast difference with whatever you guys have been taught and whatever you guys will be doing in work or doing on job or doing in the industry. Hence, it is very important that you start gaining experience. Now, how will you do it? Try to do as much as internships you can. Now you guys are in your building year, so I hope it's not that much important ki whether that internship is paid or not paid. भले वो छोटे टाइम के लिए हो, भले वो 3 months, 1 month or 6 months के लिए हो, आप try to get as much as internship opportunities you can. If you have an internship opportunity, please don't let that go. Whoever has muted themselves, I would request please mute it. एक बात Guys, please just check out अगर मैं जब भी notify कर रही हूँ that please mute yourself also, please check once कि आप by mistakenly unmute हो गए हो या नहीं. Okay, so continuing with where I have left, yeah. So आप, I hope आप सबको internship का मतलब पता है, right? Yes, yes. Yeah. So similarly, it's very important that you try to get as much as internship opportunities you can, because as I was saying, आपको जो अभी सिखाया जा रहा है और आप जो करोगे उसमें डिफरेंस होगा। आपको जो सिखाया जा रहा है एट इंडस्ट्रियल बेसिस और एट इंडस्ट्रियल लेवल, आप समझ पाओगे कि हाउ आई एम सपोज टू वर्क ऑन इट, हाउ एम आई सपोज टू अप्लाई दिस. You develop and you improve a lot of your skills while you are working. So it is very important that you try to gain as much as experience you can. Now talking about a very important part and action plan that I would like to discuss with you guys is, आपको ये LinkedIn ऐप पता है?
Yes, ma'am. The Yes. main, okay, thank you. Yes, ma'am. Okay. So the main function of LinkedIn is to find jobs, as you guys believe, right? Yes. Yeah. But with apps like LinkedIn, it also helps you to connect with your employer. आप अगर अगर आपने लिंक्डइन इंस्टॉल किया है या फिर अगर आपने अपना अकाउंट वहां पे मेंटेन किया है, आपको काफी इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। आप जो इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो या जिस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि उस कंपनी में क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर देयर करंटली डूइंग। you get a proper knowledge of the industrial trend. Hence, it is very important that you follow apps like LinkedIn not only to find jobs but also to have a clear picture of where do you want to land up. Okay. Now, as I move forward, okay. Now this is the career mentoring test. So ये जो टेस्ट है ये बहुत यूजफुल होता है because it helps you to understand. The test is basically, it's based on interest and personality. There's some set of questions, and this test helps you to have a better insight and understanding about your personality. और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरीके के जॉब आपको ज्यादा सूट करेगी, वो ये चीज आपको फाइनल रिजल्ट बताती। तो इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस वर्कशॉप। ओके, तो आपको ये पिक्चर दिख रहा है? कैन यू सी दिस इमेज? Yes, ma'am. Yes. ओके, कैन यू टेल मी कि इस पिक्चर में क्या कुछ तो गड़बड़ है? तो आप मुझे बता सकते हो कि इस पिक्चर में क्या सही नहीं है? वो ब्रिज जो है रिवर के उधर नहीं है, साइड में है। करेक्ट। ओके, ये मुझे जवाब किसने दिया है? आपका नाम जान सकती हूँ? माई सेल्फ नेहा प्रजापति। Neha, okay, you're absolutely right, Neha. The bridge has to be supposed to be on the river, not aside. Now, आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए इस पिक्चर के बारे में, ये जो आप रिवर देख रहे हो, that is river Choluteca. That's in a country called Honduras in Central America. So, in the year 1996, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल अमेरिका के, they came up with this plan कि वो एक ब्रिज बनाएंगे। वो ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी हरिकेन या फिर स्टॉर्म कुछ भी आ जाए, इट कुड विथस्टैंड दैट। So they have constructed this bridge. Now what happened? 2 years later, Central America was hit by second deadliest storm. Everything was devastated. सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ तहस नहस हो गया, but ये ब्रिज वैसे की वैसी ही रही। Now, due to the hurricane, जो जहां से जो रिवर बह रही थी, it changed its course, it made a new channel and the river started to flow from there. तो इस वजह से क्या हुआ? Despite being the strongest bridge ever, but जैसे रिवर ने अपना रुख मोड़ लिया, तो वो ब्रिज के बाजू से बहने लगी। So despite being the strongest bridge, it is just a piece of concrete now because it is not serving the purpose it has to serve. It's just a bridge over nothing. Now, what do we learn from this image is that कि no matter आप अभी at present में जो भी कर रहे हो, जो भी कोर्स ले रहे हो या फिर जो भी बिजनेस प्लान आप कर रहे हो, जरूरी नहीं कि 2-3 साल के बाद भी वो प्लान वर्क करेगा। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हो, प्रेजेंट के साथ आप फ्यूचर के बारे में भी सोचो। You have to be far sighted in order that at least अगर 2 years down the line, if something goes wrong, it is important that you could have a solution for it. जरूरी नहीं कि वो solution work करे या work नहीं करे, but it is very important that you be ready for the future consequences. अब even आप अब यहाँ पे बैठे हो, कल परसों क्या होगा हमको कुछ पता नहीं. Hence, it is very important that you have to remain future ready. You have to remain future and change ready, not only to survive the market but also to remain top in the market.
और टुडे जब जब वर्ल्ड एक ऐसे पेस में चेंज हो रहा है जो हमने कभी नहीं सोचा था, things are changing around us much more dynamically than ever. Hence, it is very important that we remain change ready in order to survive the market. अगर हमको survive करना है and if we have to be still running in the game, it is very important that you remain change and future ready. Now, this brings me to my next topic, that is employability skills. Okay. Now, what are employability skills? Employability skills एक set of skills होते हैं जो काफी general होते हैं, but ये काफी important है एक employee के लिए, because hiring managers out there are largely looking for these employability skills in an employee, which makes them more likely to gain employment. जो हायरिंग मैनेजर्स आउट देयर जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, दे लुक फॉरवर्ड कि ये सारी स्किल एक एम्प्लॉय में होने चाहिए, because that makes them more desirable to get employed. Now today in this workshop, I will be orienting you guys some of the skills which are important and which is necessary that you guys have. So ये कुछ skills क्या है? To start with, the first skill that I would like to mention and talk about is adaptability and flexibility. Now, due to this pandemic and virus, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. ना आपने ना मैंने, हमने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा. Now talking about this workshop, जहाँ पे हम फिजिकल वर्कशॉप्स लेते थे, कॉलेजेस में जाते हैं, आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, क्लासरूम में आकर हम ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं. Now, due to pandemic, lockdown, and social distancing norms, we are doing this online. Okay, अगर ये पैंडेमिक नहीं हुआ होता, आप अपने क्लासरूम्स में बैठे होते, आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो क्लासरूम में होता जैसे कि नॉर्मली होता आ रहा है. But due to pandemic, everything has changed. You, me, at least no one have ever thought that the changes that are going to occur in a pace that we guys have never imagined. Hence, it is very important that we remain adaptable and flexible. Only and if अगर आप change को adapt कर सकते हो और उस change के हिसाब से आप खुद को बदल सकते हो, only and then you will be accepted. Even the hiring managers, even the interviewees and managers are looking forward to those employees who look forward to change as an opportunity for innovation. अगर आपके अभी now giving you an example, अगर we guys know that lot of people have lost their job in the wake of pandemic, but today only those people are surviving and have their jobs who could change to the environment, to change to this big situation that is offered. Hence, it is very important that we learn to be adaptive and flexible in order to be surviving in the market, and second, to be more employable. Hence, change को कभी change को एक challenge की तरह देखना होता है, और उस challenge को हम किस तरीके से पूरा करना होता है, हमें उस चीज के बारे में सोचना है, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि अरे यार सब कुछ बदल रहा है, हम नहीं कर सकते. It is just not simply viable. It is very important that you learn to adapt to the changes that's happening to our environment. Moving towards the next skill, that is communication and emotional intelligence. तो आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ, हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट होता है, भले वो जॉब के लिए क्यों ना हो, even in our day-to-day life, communication skill is yes very important. But when we talk about emotional intelligence, you guys might have been thinking कि emotional intelligence का क्या काम, ये क्यों जरूरी है? Okay. Yeah. Emotional intelligence or showing sympathy or showing empathy towards your colleagues is very important, because only and if you can develop the loyalty and trust among your groups. अगर आप अपने कलीग या अपने टीम मेंबर की तरफ एक वो एम्पैथेटिक बिहेवियर रख सकते हो, जहाँ पे आप उनको बता सकते हो या महसूस करा सकते हो कि ओके, आप समझ रहे हो कि वो किस
चीज से गुजर रहे हैं, then and only they can have a feeling of loyalty and trust among you. और ट्रस्ट वर्क एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है. Hence it is very important that you learn to show empathy towards your colleagues and your work members in order to have a productive work delivered out of it. The next skill that I would like to talk about is teamwork and collaboration. Now आप लोग SYs में हो, आपने काफी ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए होंगे, am I right? Yes. करेक्ट. आपको क्यों लगता है कि टीम या ग्रुप प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ग्रुप में हम लोग को एक दूसरे से नई नई चीजें सीखने में मिलती है. करेक्ट. टीम वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अभी जिसने कहा, यू हैव यू एब्सोल्युटली राइट, कि हमको एक दूसरे से काफी चीजें सीखने को मिलती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब कल को जॉब करोगे, जरूरी नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही काम करो. जरूरी नहीं कि आप जिस टीम में हो वो आपके टीम मेंबर्स आपके फ्रेंड्स हो, या आप अपने टीम मेंबर्स को जानते हो. टीम वर्क गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड फेस द चैलेंजेस. अगर आप एक जॉब एनवायरनमेंट में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ and still be able to deliver the most productive and efficient work you can. Hence, it is very important that आप अपने अंदर team building skills develop करो, because A, yes, it helps you to learn a lot from each other. B, it helps you to come out of your comfort zone. C, it helps you and it improves the problem solving attitude of yours. एक दूसरे से आप जब सीख रहे हो, आप एक दूसरे से गलतियों से भी सीख रहे हो. एक दूसरे की गलतियां देखकर भी आपको समझ में आती है, ओके अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर मुझे ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए in order to be in a safe zone. Hence, it is very important that you learn to teamwork and you learn to collaborate with others in order to bring good results out of your team. Now, when I talk about teamwork, अगर टीम है तो लीडर होगा, और अगर लीडर है तो obviously काफी responsibilities हैं. Now, what would I say कि a good leader is? A good leader is not only a good team player, but it is very important कि एक लीडर के लिए कि आप अपने ग्रुप को समझो, आप समझो कि आपकी टीम में कौन है, आपके टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है. Only and then you will be able to allot them work according to their strengths and weaknesses. आप नहीं चाहते कि आप अपने टीम मेंबर्स को ऐसा कुछ काम दे जो वो नहीं कर सकते, या फिर maybe it doesn't suit according to their strength. In the career planning, while I was saying कि आपकी personality, आपके strengths, weaknesses काफी important होते हैं to understand कि आप कौन से job काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो. So as a leader, it is your responsibility to identify those strengths and weaknesses of your team members and allot them work accordingly. Only and then आपका team strong होगा, and only and then आप अपने team में से अच्छा काम produce कर पाओगे. तो एक लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को समझे, ट्राई टू make and loyal and trustworthy environment among your colleagues and team members, and make sure that the whatever work we have been producing, that is up with mark. The next most important skill that it is very important you guys learn in today's time is digital communication. With now everything being changed to digital, ये काफी important है कि आप
डिजिटल टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट करें। आप वो सारे छोटे, whoever has unmute themselves, please. I would need, yeah. Okay. So as I was saying, digital communication skills, it is very important for you guys, as it's not only it is going to be helping in today's time, but also where everything is moving online and work from home, we soon have realized कि सब कुछ physically होना जरूरी नहीं। जो काम एक हम फिजिकल एनवायरनमेंट करते थे, फिजिकल वर्क ऑफिस में करते थे, वो वही काम हम ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। Hence, it is very important that you learn and develop your digital communication skills well, because it is going to be a new trend of an hour. It's going to be the change of time, and it is going to be the necessity of an era. Hence, it is very important that you develop and acquire yourself with good digital communication skills. So in order the communication over internet remains as effective and productive as it was in the physical environment. So ending up my presentation here, so these are the some of the skills that today interviewees are looking forward in an employee, and these skills will make you more employable and will make you more desirable to get that job that you will be trying to acquire in next few years. Now moving forward to the next phase of this workshop, we have our guest speaker, Mr. Kirit Dhabalia, sir. I would like to welcome you to this workshop. And without any further delay, I would like to ask sir to please come on board and share the mic, and please give them all the career opportunities they could have. Thank you. Sure. Thank you. Thank you so much for giving opportunity, Sanjana ma'am. All right. Can you allow me to share my screen? Yes, sir. I'll make you the host. I think I can now. Okay. All right. All right. All can see the screen. Everyone, सबको दिख रहा है screen? Yes, sir. Very good. All right. So may I ask what is your interest? आपको किस में जाना है interest? Basically development है या फिर application है या web है या game है या database है या फिर analytics? कहाँ आपको ज़्यादा interest लग रहा है? Anyone? You can type out, you can speak, so that I can emphasize more on those topics. I'm going to cover everything, whichever I feel, but अगर आपकी तरफ से कुछ input आएगा, then I'll be more than happy. Development. Okay, very good, Omkar. Anyone? Analytics. Ah, wow. Nitish, ethical hacking, very good. All right, graphics, web. Super. We have a mixed bag. Very good. Artificial intelligence too. Okay, great. All right. Let us start with the development, because that's a core of any IT industry. अगर आपको IT industry में जाना है, तो at least you should have an understanding of development, programming, program कैसे लिखा जाता है, या फिर nowadays तो we call it a purely object-oriented concept. So OOP concept. So anything in IT, especially on a development side. Programming language has its own importance, has a very important basically. So maybe we can start with C, if at all you are interested in C language, because that is going to be the base of anything. So C, C++, I'm sure सबको पता रहेगा, C++ and Java, which is purely object-oriented programming. Or if at all you want to go more deeper, probably I'm sure you must have heard of Python and Erlang and Kotlin and so on. So these are all programming
basically for all the, whether it is a system designing or a system development or any of the application development also, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है. Now, how do you prove कि आपको सी का बहुत ही अच्छा नॉलेज है? How do you prove that you have a very good knowledge of Python? So best thing is, if at all अगर आप सोच रहे हो कि नहीं I want to go into development only, then get yourself certified. Fine, you are doing your graduation, post graduation, BTech, whatever you are doing. Fine, you are studied with everyone, but how you can be different from others? Provided you have some certification. And in IT industry especially, this certificates plays a major role in getting your job. So if at all you are interested, go for some certification, especially any of the programming. In fact, see, if you look at IT में nothing less than 5,000 certificates. IT में 5,000 से ज़्यादा certificates available है. So not to worry about what is to be done about so many certificates. We are more concerned with which roadmap, हमारा गोल क्या है. That is what is more important. अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट करो, प्रोग्रामिंग करो. इसी में आप you do your certification. There are so many certifications available. There are certifications available by Microsoft, and any open source certificates are also available. There are many certificates available on this. Number one. Number two, अगर आपको लग रहा है कि you are not that confident enough कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो there are so many learning channels. बहुत सारे learning channel है. आप कहाँ पे भी जाइए and enroll yourself, go through all the videos available, all the practicals available, go through it, see whether you can really crack this or not. I'm not saying it's a difficult part, but at the same time, if you have logical concepts clear with you, अगर आपको लग रहा है नहीं I'm good in logic, क्योंकि logic किसको सिखाया नहीं जा सकता, वो अपने आप आता है as the experience. Once you experience, once you know, then you learn a lot as you keep on writing. So development programming language is something very important. अगर आपको उसमें जाना है, so you get yourself enrolled anywhere in, there are so many free channel available. I am telling you again and again. This is my advice to all my students. कि आपको जब भी कौन सा भी चीज करना रहेगा, फ्री चैनल पे जाओ, देख लो, अगर लग रहा है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, then only go for it. Otherwise don't waste your time. लेकिन आपको एक रोड मैप बनाना है, आपका एक माइलस्टोन बनाना रहेगा कि भी आपका गोल ये है और ऑब्जेक्टिव्स ये है. या यस, सो आई सजेस्ट, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, लेकिन आपका डेवलपमेंट का लाइफ कितना, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, कितना, 5 years, 7 years, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको यू हैव टू क्लाइंब द लेडर. अगर आपको उससे ऊपर जाना है, तो फिर आपको हाउ टू मैनेज द पीपल, वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट? हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट, वो आपको सीखना पड़ेगा. हाउ टू गेट क्वालिटी वर्क डन, that. So ultimately, once you climb the ladder of success, especially after 4 years or 5 years of development, अभी आपको सब पता चल गया कि भाई डेवलपमेंट कैसे होता है, अभी हमें एक स्टेप ऊपर जाना है. But as I told you, you cannot spend your entire life in only development. अगर आपको you have inclination to climb, you know, like you have want to go up, then definitely this is a stepping stone. But at the same time, उसके आगे भी आपको बहुत कुछ करना है. That is one.
सेकेंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्पेशली आईटी, इट इज इतना चेंजिंग है, ये फील्ड इतना डायनामिक फील्ड है। अगर आपने आज कुछ किया तो शायद 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद तो शायद आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, because there are changes happening. So you are always on your toes, you are always on your toes, that you will have to learn a lot. अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आप एक चीज समझ लीजिए कि भाई आपको 2 साल के बाद तो कुछ ना कुछ करना ही है, नहीं तो आपका जो नॉलेज है वापस जीरो पे आ जाएगा। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अगेन यू डू समथिंग, अगेन a year, 2 or 3, others वापस come back. So development is very good, but you have to go further after couple of years of experience. Now, if you don't want to go in totally into development, totally development में नहीं जाना है आपको, तो एक और है जो वेब टेक्नोलॉजी है, या तो फिर आपको प्योरली कमर्शियल एप्लीकेशन बनाना है। Now, commercial application could be your e-commerce also, could be a financial accounting, could be enterprise resource planning, or it could be any app. कुछ भी हो सकता है। So, if you are really good and if you really want to go into that, Microsoft technology. I suppose .NET technology शायद आपने सुना ही होगा। I'm 100% sure आपने सुना होगा। VB.NET, ASP.NET. Code behind will be C# or VB, Visual Basic, or C#. C# is the version by Microsoft. C# एक वर्जन है Microsoft का है, Object-C is Apple वाले का एक वर्जन है, but ultimate base is same. अगर आपको commercial application करना है .NET टेक्नोलॉजी है, और now तो .NET टेक्नोलॉजी के साथ there are so many other things available which you can use for any platform. अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है और मोबाइल डिवाइस के लिए एप्लीकेशन करना है तो भी आपके एक प्लेटफॉर्म दे देगा, तो आपको कोड में इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो यू डू माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोग्रामर, MCP और MCST सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप वो भी कर सकते हो, बट provided you want to go into commercial application. All right, अगर commercial application में भी थोड़ा कम interest है, but you want to go into web, then you can do definitely any of the website. Either you can go for a static website or dynamic website, or to go further into that, there is something called as a portals or e-commerce website. You can go into e-commerce website also, but again you have to pick two different things. Either you want to work with the Microsoft technology, या तो फिर आपको ओपन सोर्स में जाना है। आपके पास दो चॉइस है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जा रहे हो आपको, तो .NET टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, and you can start you can write a very super e-commerce software. अगर आपको वो नहीं करना है, then you have to go for a open source. So open source PHP, I'm sure all must be knowing. PHP is something that is purely open source, and you can do a lot of development using PHP as far as your e-commerce websites are concerned. But I still suggest that either you go for a PHP or a Microsoft, again go for some certification, because that will recognize you that you are aware of the technology. आपको ये पूरा सब्जेक्ट पता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको पूछूंगा आपने क्या किया है, बोला सर मैंने तो आईटी में BSc IT किया हुआ है। हाउ डू आई नो दैट यू हैव डन BSc IT? यू विल शो मी द सर्टिफिकेट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आप किसको बोलना चाहते हो कि यस आई एम ए सर्टिफाइड डेवलपर, तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। योर एक्सपीरियंस मे नॉट वर्क व्हाइल गेटिंग एन इंटरव्यू, व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू, but experience will work only when you get the job. So it puts a lot of weight on your CV. So
Web development, uh, either you use open source or you use Microsoft technology. Development, again, there are open source available. You can do because Python is something, Python and Java, that is going to be future. Let me tell you honestly. There are so many, like Erlang is there, your Kotlin is there, Ruby is there. There are many, but ये सारी चीजें ना वो अपने अपनी जगह पे, depending on what industry you are, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो इंडस्ट्री के हिसाब से ये लैंग्वेज पिकअप होती है. लेकिन लेकिन सबका फंडामेंटल एक ही है, सबका फंडामेंटल एक ही है. अगर आपको एक लैंग्वेज आता है तो दूसरा लैंग्वेज समझने में और उसमें प्रोग्राम लिखने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट यू शुड बी एक्सपर्ट इन वन एटलीस्ट. ऑलराइट, सो अगर if you are not interested in, सर मुझे ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना है, but there are few people, if at all they are interested in games. गेम का ऐसा इश्यू है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग, लेकिन उसका जो लाइफ होता है बहुत कम होता है. एंड टू डेवलप अ गेम आपको बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा. And there are, let me tell you honestly, there are so many software available. There are so many software available by which you can develop the game easily. I'm sure सबको पता रहेगा, Stencil है, you have a Twine है, you have a Game Salad है, Game Fruit है. There are so many. It's like a drag and drop. अगर आपको कुछ गेम डेवलप करना है, आपको बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा. प्लानिंग करने के बाद देयर आर सो मेनी यूटिलिटी अवेलेबल. आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका गेम रेडी हो गया. बट एज आई टोल्ड यू, लाइक यू हैव टू बी विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी विद द लेटेस्ट ट्रेंड, और इसका लाइफ बहुत ही कम है. तो आपको आगे की सोचनी है कि भाई ठीक है, मैं अभी तो मेरा करियर स्टार्ट कर रहा हूँ गेमिंग के अंदर, लेकिन आगे जाके मुझे क्या करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. Unless you come up with a beautiful game and games like, let's say, PUBG. I'm just giving one example. PUBG earns nothing less than 6 crore a day. जब भी PUBG बैन नहीं था तभी 6 crore per day was the income. So there is a vast scope, मतलब sky is the limit. But you have to be with the latest trend. आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा. You can start, but as I told you, like आप जब ये आपका जो रोड मैप बना रहे हो तो उसमें देखो आपको कहाँ पे पहुंचना है. Because as I told you, like it is a very short life, because आपको बहुत सारा डेवलपमेंट करना पड़ेगा. A lot of competitions, so many things. So before you take a plunge into this, think twice. Ask someone, कोई किसको पूछ लो कि भाई हम लोग इसमें आगे कितने तक बढ़ सकते हैं, जिसने ऑलरेडी गेम डेवलप किया होगा. तो आप उसको पूछिए, उसके साथ आप कोलैबोरेट करिए, एंड देन यू प्रोसीड. एलोन करना बहुत डिफिकल्ट है. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, आई एम सेइंग इट्स डिफिकल्ट. बट एज आई सेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशंस. आप गेम डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है. सो अगेन, अगर गेम डेवलप करना है, पाइथन, सी शार्प तो आपको करना ही है, whatever you do, right? C++ is there. Let's say game design and development. There are many certifications available by Coursera, edX. There are so many certifying body. आप वहां से अगर आपका सर्टिफिकेशन करते हो तो first of all it is internationally recognized. Secondly, it gives you identification. It gives you one identity that yes, you are certified. So there are so many certifying body, but as I mentioned again and again, before you take a plunge, आप देखो पहले, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, फ्री चैनल पे जाओ, ट्राई टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज. स्क्रम मास्टर जाओ, स्क्रम में चेक करो,
बाद में आप एग्जाम दो, बिकॉज सम ऑफ द एग्जाम्स आर वेरी कॉस्टली एंड एक बार अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ ना तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाएंगे, देन यू विल ऑलवेज बी ऑन बैक ऑफ द माइंड, हमेशा ऐसा लगेगा अरे मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, सो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। सो द बेस्ट थिंग इज टेक योर टाइम, आराम से, 1 महीना से ज्यादा लग रहा है तो लेट इट टेक 2 months, आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, forget about 1 month as of now, you will be practicing more and more and more, and then you will be appearing for the exam. But if you don't practice, अगर आपने एग्जाम दिया and you are not able to crack, then you will repent, फिर आपको 4 महीना और लगेगा to cover up the things, and और वही शॉक से बाहर आने को वापस टाइम लग जाएगा। So प्लीज अगर आपको लग रहा है 2 महीने में हो जाएगा मेरा, 3 महीने के बाद दो एग्जाम। Don't give anything in haste. So a lot of certification for games also, and there are so many other engines available. Like Corona is something which game engine is there. I'm sure जिसको पता रहेगा तो there are so many engines available. There are so many ready-made portals available, and you can subscribe them also. Open source भी है. Just drag and drop, and you are ready with the system. Now, not interested in development, I don't want to crack you, break my head in doing all the C sharp or anything on a development side, ज़्यादा मुझे web पे भी कुछ नहीं करना है। But if you are good at managing the things, all the resources, then there is something called the database management. Database, I'm not saying that उसमें आपको जरा भी लॉजिकल या फिर डेवलपमेंट का नॉलेज जरूरी नहीं है, आई वुड नॉट से दैट, बट एटलीस्ट लॉजिकल थॉट प्रोसेस होना जरूरी है। सो there is something called Oracle and Microsoft SQL, Oracle का Oracle database है। Of course, Oracle database is more in demand, actually speaking, and if you can do certification like DBA, Oracle DBA or OCP, Oracle Certified Programmer, Oracle Database Administrator. Again, every organization, good organization, need at least one DBA. So you can go for a certification of programmer or database administrator. And this all certificates are internationally recognized. I repeat, Oracle और Microsoft और जो भी बड़ी कंपनीज है उसके सारे जो सर्टिफिकेशंस है ना वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सो इट्स नॉट दैट कि भाई आपको इंडिया में वो रिकॉग्नाइज होता है बाकी कोई कंट्री में नहीं होता, ऐसा नहीं है। सो दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, डेटाबेस एवरीवेयर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव दिस बिकॉज डेटा वहां पे ही स्टोर होगा और उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो एडमिनिस्टर करेगा, पूरा रोल राइट्स डिजाइन करेगा, क्वेरी लिखेगा, उसके लिए व्यूज बनाएगा, ट्रिगर बनाएगा, एंड सो ऑन, स्टोर प्रोसीजर्स एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। आई एम श्योर आपको डेटाबेस के बारे में पता होगा, बट अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगेन गो टू फ्री चैनल, देखो आप, एंड इफ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, honestly nothing like it, because you may not be, I'm telling you why I'm telling you, because this is my personal experience. You may not be good at development. I know one of my students was not good at a development, but somehow he managed to crack DBA, and now he is at a really very good post in JP Morgan. So my advice is, development में interest नहीं है, forget it, not to worry. There are so many avenues as far as the IT goes, so many. You can go for a database management. अगर आपको database management में भी नहीं अच्छा लग रहा है, there is something called software engineering.
especially server management. Purely you can work on a Windows server. Get one certification, Windows server. It will change the life. Red Hat technology, Linux पे ले लो आप, Unix पे ले लो आप, open source है. How to manage all the resources, how to manage I think in a Windows सबको पता रहेगा, there is something called Active Directory. How to give role rights, how to manage the network, and so on. अगर आपको डेवलपमेंट में नहीं जाना है, DBA भी नहीं करना है, manage the server. Again, as I mentioned, any good company, they need one person who will manage the entire database, another person who will manage the server. Microsoft certification, or you go for a Linux or a Red Hat, this is something which will really put you ahead of all the CVs. आपका CV पे इतना वेट आ जाएगा, वो उड़ेगा ही नहीं टेबल पे से, honestly. And it's not that I have seen even a science graduate done Linux or Red Hat, एक certificate उसने कर लिया था. I know because that a boy was working under me, and I think now he is in a Cognizant. So because he did just one certification on Red Hat. तो अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, डेटाबेस में भी इंटरेस्ट नहीं है, सर्वर मैनेज द सर्वर. You don't want to go too technical. आपको एकदम टेक्निकल पे नहीं जाना है. Then there is a wide scope. Let me tell you, this is going to be a future for every organization, any commercial software. When you think of, people will always think of enterprise resource planning, ERP. There are three companies. There are thousands of companies. I repeat, there are thousands of companies, but there are these three companies whose market share is more than 47 to 50% in a tier 1 company. मतलब जिसका 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर रहेगा. You think of those companies: SAP, Oracle, and Microsoft. These are the three major companies. But as I told you, they have number of modules. ERP में बहुत सारे modules है. Sales and development है, management है, maintenance है, HR है, you have quality checks है, and so on. Production management है, inventory management. बहुत सारे modules है. आपको जहाँ पे भी interest लग रहा है, you go through that. But as I mentioned, and especially ERP के लिए मैं हमेशा बोलूँगा आपको, don't enter into that. आप फ्री कोर्सेज है, वहां जाइए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, बहुत सारे चैनल्स है. आप देखो ERP का वर्किंग कैसे होता है. अगर आपको लग रहा है कि दिस इज योर कप ऑफ टी एंड यू कैन मैनेज इट, then only you register with all the authorized your education provider, SAP, Oracle, and you have Microsoft, because these all certifications are very 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 costly affair. बहुत ही costly है ये. तो and you will be spending a lot of time also. 1 साल 1.5 साल लगेगा आपको खत्म करने को, और सर्टिफिकेशन का फीस भी बहुत है. एक पेपर देंगे आपको 25,000 का एक पेपर आएगा. सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको इसमें जाना है, फ्री चैनल पे जाओ, पुट लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स इन, गिव लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स. सोशल मीडिया पे आप आधा घंटा मत देना ज्यादा. इनफैक्ट देयर इज अ सर्वे इन इंडिया, most of all the youngsters, more than 4 hours or 5 hours they spend only on a social media. Imagine, इतना टाइम आप डेवलपमेंट में देखो, चैनल पे जाओ, देखो ERP कैसे वर्क कर रहा है. अगर आपको सही में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, गो फॉर इट. नेवर, कभी बंद नहीं होगा, डेवलपमेंट होते रहेगा इसमें. और इसमें और एक डेवलपमेंट है, where people don't want to buy the things, but people want to rent.
जैसे उबर ओला उबर चलता है ना, कैसे चलता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मुझे गाड़ी में ट्रैवल करना है तो आई विल हायर उबर, करेक्ट। सेम वे मेरे पास सर्वर नहीं है, मेरे पास बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है विच इज गोइंग टू कॉस्ट मी lakhs and crores of rupees. What I will do, I'll buy the services. That is what we call the cloud services. So there is an ample of opportunity in a cloud. Ample. Sky is the limit again. So you can be a good administrator, good architecture, good engineer, good developer. Lot of free courses available again before you plunge into, before you take a certification. One, software as a service, infrastructure as a service, platform as a service, and desktop as a service. So instead you buy the whole stuff, rent it. And Microsoft Azure, Salesforce is there, CRM software, VMware is there. You have your Amazon Web Services, you have a Cisco, Google, बहुत सारे. And again, ये कभी एंड नहीं होगा, ये आगे ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि नाउ द सिनेरियो इज टोटली चेंजिंग. सिनेरियो इस तरीके से आ रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अजाइल मेथोडोलॉजी. आपने शायद नाम सुना होगा, स्क्रम और अजाइल शायद आपने सुना होगा. तो व्हाट पीपल वांट, पीपल डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील. अरे ऑलरेडी किसने व्हील बना चुके हैं तो उसमें अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी मॉड्यूल्स अवेलेबल. इसका मॉड्यूल अच्छा है वो ले लो. लाइक थिंक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. स्काइपी क्या है और किस कंपनी का था, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पैसा नहीं, टाइम, money. They didn't wanted to waste time and money in developing the things again, which already is there. किसी और कंपनी का था, ज्यादा पैसा देके खरीद लिया. So now they are collaborating. This particular system put together, and you have created a new system. Now the future is only this. Let me tell you honestly, future यही है, किसी एक का proprietorship होगा ही नहीं. All you'll have to do is a collaboration. अच्छा तेरा ये अच्छा है, मैं तेरा ये ले लाऊं, तेरा सब्सक्रिप्शन मैं ले लाऊं. Then you are taking a subscription from many people. आपने एक अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर बना दिया, दे दिया सबको, they started using it. As you get the money and you start giving it to all your collaborators, खत्म. आपको भी मिल गया पैसा, दूसरे को भी मिल गया. So nowadays all agile methodology. You don't create a new things. It's already available. Start using it. So cloud computing, which is going to be the next future, because everyone would want to go only by cloud computing, because ये कंपनी के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, state of art technology, everything is there. Why you want to spend those money just for your proprietorship? Forget it. आपको रेडीमेड चीज मिल रहा है तो आप वहां पे जाओ, and you could be one of the ambassador for this. You could be engineer, you could be architect, administrator, developer, and so on. Now, again, आपको अगेन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, then there are two more thing I will suggest. There is something called as networking. I think somebody mentioned ethical hacking. I suppose, yeah, Mitesh mentioned about ethical hacking. So Mitesh, especially अगर आपको ethical hacking करना है, there are certification available by ethical hacking body council itself, but you should have a very good knowledge of networking. Again, Cisco का
एक सर्टिफिकेशन आता है, यू कैन गो फॉर सिस्को सर्टिफिकेशन, नोवेल नेटवर्क का भी आता है, go for networking certification, and believe me, it will pay you a lot. Computia, you have VMware, you have Amazon Web Services, again Juniper Network, you have a Cisco. If you can really good at understanding the network, and if you can really do well into this, again, all the call centers, think of a call centers, think of all the e-commerce company, network engineer plays a major role, because this is a stepping stone for any network to stop, whom to allow, whom not to allow. तो उसके बाद अगर आपको जाना है, then you can go for ethical hacking. Now, don't be under impression that sir ethical hacking मतलब hacking ही हो गया. It's not that. All the e-commerce company will hire you. All the e-commerce company will ask Mitesh, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, उसको हैक करके बता. So this kind of assignments you will get. Any good company will basically approach all the ethical hacker, asking to test the software, asking to test the portal. Even a country, organizations, they all hire ethical. So there is again a good scope in hacking, but basic fundamental of network and all the servers and anything related to networking, आपका अगर fundamental सही में अच्छा है, then you go for a networking, and then उसके बाद आप ethical hacking करिएगा. So ample of scope again into ethical hacking. Now, if you really want to play with the figures, nothing to beat data analytics. There are so many certifications, there are so many softwares. In fact, there are masters courses available only on data analysis or a data science, somebody used to call it. So there are so many software, you can do a lot of certifications on that. Actually speaking, you can do certification in this, especially there are so many software available. So the best thing is, if at all you are really good, understand all the statistics, understand the software, and if you can really like to play with all the figures and understanding the patterns and the correlations and so on, go for data analytics. Again, it's a very important, because nowadays data is going to be more costlier than gold. Let me tell you. What we do, we install any of the app and we just say yes. What is happening? You're telling all this software company to access your gallery, access your microphone, access your camera. What else they need? Access all the cookies. खत्म. पूरा डेटा तो उन्होंने उठा लिया आपके पास से. So data is going to be very important. They do a lot of data mining. So think of a company like research company. If Apple wants to find out, if they come up with a car, गाड़ी चलेगा या नहीं चलेगा, right? If the company wants to find out, if I start bank want to find out if I want to come up with a new financial portfolio management system, will it work or it will not work, right? So there are a lot of research company do research, and then ultimately they use some of the softwares, and they come up with all the patents and other stuff. Think of a retail industry. How do they come up with you buy this two, you get one free. अगर आप दो खरीद रहे हो तो आपको तीसरा वाला 50% डिस्काउंट में, चौथा वाला फ्री मिल जाएगा आपको.
They study a data a lot. And it's not just the previous data. It is not just the previous data. It is all about your competitors' data, your national data, international data, your research data, your history, and so on. There are a number of things they put together, and then they come up with all the schemes and understand the patterns and the relations and so on. So, and the one step further, artificial intelligence again, which plays a very important role, especially when you understand the things. Of course, there are a number of things which I am not going into detail about AI, but there are some certifications available. For example, professional certificate program in machine learning and AI by MIT, and engineering certification program by AI Board of America. So these are some of the certification for AI data analytics, which is going to be future again. If not, as I said, cloud computing, which is going to be very important. If at all, one step below, ERP, enterprise resource planning, is very costly affair, but yes, you can build your entire career in ERP. After everything happens, this is a long-term goal. I'll take 5 minutes more, ma'am. Is it okay? Yes, sir, it's okay. Thank you. Now, if at all you think that and you create your roadmap in such a way that yes, you want to go ahead and you want to climb the ladder fast and you want to be at the management level, then there are certain professional certifications. Now, you can think of, I'm sure you must have heard of project management professional, you have risk management professional, portfolio management by PMI USA. Even if you actually speak, if you check on the internet also, top 10 certificates, recognized top 10 in demand as far as the IT goes, you'll always find CISA, CISSP, Agile Methodology, Project Management Professional. These are the certificate which has a huge importance, and it is all internationally recognized. I repeat, it is all internationally recognized. Even if you go for a quality, there is something called Six Sigma, internationally recognized. Six Sigma, you have a green belt, then you have a black belt. Go for it. These are all expensive one. Let me tell you honestly, PMP $500 आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह में चला जाएगा, बट आप 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उस पर आप देखिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये पढ़ने को आपको कम से कम 4 महीना लगेगा. So, and there are some prerequisites, so that you have to fulfill. That's a separate story, but it has a huge impact. CISA, again, Certified Information System Auditor. There are so many chartered accountants. They hire this kind of people, or they do themselves this, because every e-commerce company, every bank, whomsoever is dealing with online transaction has to be certified. They have to get it certified, and every bank requires CISSP certification. एक बंदा ऐसा रहेगा जो CISSP सर्टिफाइड रहेगा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, which is definitely the bit difficult one. I would rate this CISSP, even CISA and PMP. These are all a bit difficult. I would not say it's that difficult, impossible, लेकिन bit difficult, but
it tells a lot. And again, I'm telling you, the moment you have this certification, anybody will take you. Matlab, it is going to be a kind of a red carpet. It is a cakewalk for you because you are professional in this. अगर आपको थोड़ा आगे जाना है, अगर इसमें नहीं जाना है, you can do ISO 9000. You can become an auditor also. You can become an internal auditor, external auditor also. You can do ISO 9000 internal auditor, external auditor. But all this professional certification, you can put it, think of after 5-7 years, yeah, within a 10 years, you want to achieve. So बहुत सारे certifications है, बहुत सारे, but it's all up to you. आपका रोड मैप कहाँ पे जा रहा है, आपको आपका गोल पोस्ट कहाँ पे है और आपको कहाँ पे पहुंचना है, और ये बीच में ये सारे आपके माइलस्टोन आ जाएंगे. So whatever you choose very wisely, because आप शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए. 2 साल 3 साल के बाद आप क्या करोगे, 5 साल के बाद क्या करना है. तो आप आपका इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर. आप आपका विजिटिंग कार्ड बना लो, 2 या 3 विजिट कार्ड बनाओ, 5 साल 10 साल 20 साल. 5 साल के बाद मेरा विजिटिंग कार्ड ऐसा दिखना चाहिए, 10 साल के बाद मेरा इतना ऐसा दिखना चाहिए, और 20 साल के बाद मेरा विजिटिंग कार्ड ऐसा दिखना चाहिए. दैट इटसेल्फ विल टेल यू कि आपको लाइफ में अभी क्या करना है. ऑलराइट एवरीवन. So this is what I wanted to talk, especially as per the audience. I think these are the things which should be highlighted. So at least they will have some idea about some of the certifications, and you can pursue your career in development, web development, your data analysis, your networking, ethical hacking, or you go as a ERP consultant or system auditor, and so on. So this is all from my side, and I would appreciate if you ask me some questions. So I have a question from Sahil. I'm not sure whether you've seen it or not. Sure. In information technology, which field have high scope in future? Which I didn't get last sentence. Which field have high scope in future? As far as the IT goes, that is what, in which IT, which field has a high scope? Sahil, I like your question. First of all, say something like this. Let me tell you honestly. There is a high future in artificial intelligence, but I'm not interested. Are you getting it? What I'm trying to say? So ultimate aim is basically it's not about where it goes, but you can always get something out of it. Or in other words, what I wanted to say, scope is everywhere, provided, as I told you, like ERP, if you have professional certification, cloud computing, data analysis. So one of the, in fact, one of the research company, Harvard Business Review, they mentioned that data analytics is one of the sexiest job. Imagine such a big company making such statement. So there's a ample of scope everywhere. Technology, as I told you, like there is a huge scope, and especially when you are trying to connect the business with it. It is not purely technical, but when you connect the business, all will have a huge scope. Sky is the limit. Sahil, have I answered your question, or you want more information?
Sahil? I think so. You have answered his question. Sahil, you can write your reply in the chat box what sir is asking. And for others, kindly please ask your questions to sir, as this is some opportunities that you might get to interact with actual industry person and get insight of the same. तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालिए, हमारे पास कुछ टाइम है सर के साथ Q&A करने के लिए, तो आप अपने क्वेश्चंस डालिए और अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. Do we have any more questions, students? Please ask without hesitation. Don't be under impression that you're asking a stupid question. Please ask any question. Any question. Sir, salary क्या मिलेगा वो भी आप पूछ सकते हो. So that is the reason I'm telling you. Don't hesitate to ask any of the question. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अंदर ही रखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही में उसमें मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर आपको ब्लॉगिंग में करना है, लेकिन ये सारे आपका शॉर्ट लाइफ, उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है. बट इफ यू आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, यू आर गोइंग टू ERP, डेटा एनालिटिक्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है आपके पास, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डेटाबेस, नेटवर्किंग, वो कभी भी कम नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ते जाएगा. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, actually, I have one doubt that first I used to do blogging, okay, on WordPress. Okay, so I would prefer, like, is it okay to do on WordPress, or why I should go while coding only, with coding only? No, I'll put other way around. See, WordPress, they gives you a platform on which you blog, correct? It's simple as that. Yeah. Now, just to give you understanding, देखो आपका जब भी ब्लॉग करते हो तो अल्टीमेटली आपका ब्लॉग पे कभी आएगा when person hit the first website of और फर्स्ट वर्डप्रेस, और उसके बाद आपके ऊपर आएगा. तो एक्चुअली क्या होता है, जितना हिट आपको मिलता है उतना वर्डप्रेस को भी मिलता है. Okay. आपको समझ में आ रहा है? Yeah, I'm getting. So if I'm working under you and my blogs are good, लेकिन पहला हिट आपको मिलेगा, उसके बाद मेरा ब्लॉग को हिट मिलेगा, right? So Yeah. ultimately your aim should be your own blogging site. Ultimately. So everyone use WordPress only, to be honest. Everyone use WordPress, but आपको क्या देखना है, how your search engine. देखो आप जितने भी ब्लॉग करते हो ना, सर्च इंजन सारे का सारा ध्यान रखता है. Okay. So it's very important. That आपका you put it in a such a way that it comes under search engine also, because search engine में आएगा, optimization होगा, then more people will come to know about your blog. So at the moment, whichever platform you use, but I feel WordPress is the right one. But अगर आपको लग रहा है कि आपका दूसरा प्लेटफॉर्म से शायद ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो रहा है and you get a more traffic, go for it. But again and again I'm telling that you cannot survive only with, see, I'm not saying that you cannot, but आपको उसमें एक ही चीज पकड़ के आप आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते. My recommendation to you is you can go for a digital marketing. There are many other avenues by which you can do this, and there are a lot of courses available. स्वयं का भी बहुत सारे courses है, आप करो उसको. Understand कि blog अकेला नहीं है, content marketing भी है, और कुछ reputation, online reputation management भी है, and there are many things, search engine optimization भी है, बहुत सारी चीजें. I recommend that अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग में
इंटरेस्ट रखना चाहिए, बिकॉज दैट अगेन इज गोइंग टू बी वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आपको कंबाइन करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज ऑल योर वर्क ऑफ ब्लॉगिंग आल्सो समवेयर एल्स आल्सो। Okay. Thank you, sir. So I have a question from Lakshman. What will be the requirements for data analytics, means eligibility and all? Okay. Yep, direct. Yeah. Very good question. And I'm so happy that somebody is asking on data analytics. Actually, see, generally what happens, like all the professional certificates, especially IT related, they are least concerned about your qualification. But if you are a graduate, then you can go for a master's also only in a data analytics. I suppose, if I'm not mistaken, BITS Pilani has certification in data analytics, data science. I think SP Jain is also having it. And there is one more institute which I don't recollect. So such a big institute, they run full-time courses only on this. Okay, Sahil, you want to create an app? So which courses? Okay. See now, first of all, Sahil, there are 2-3 platform available. I'm sure आपने सुना होगा, Xamarin वगैरह सुना है आपने? Okay. There are few platform available which allows, अगर आपने उस पे डेवलपमेंट कर दिया ना, तो it will work for a Windows app as a Android also and your Apple also. So कोर्सेज अगर आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फ्रेमवर्क पे जाना पड़ेगा, कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज करना है. So there are many framework. Say app development framework is there. You can go through those. Can do is mobile, Angular. You have a native script, Onsen. There are many. In fact, there is one more, which is a Microsoft technology. One that is Xamarin, is something which is very important. If at all आपको .NET technology आता है and you use this as a tool, then it will convert your app into Windows based, Android based, and your Apple based. So courses, I cannot just pinpoint at one, but there are so many courses available, especially MOOC and SWAYAM also there are courses available. I strongly recommend all my students, आप स्वयं में जाओ या तो फिर आप MOOC में जाइए आप, and there are so many courses available, and it has a अगर आप this first of all ये free है, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको 4 पॉइंट क्रेडिट का मिलेगा, which is very important for you to gain this credit, because we all know education system पूरा change हो रहा है धीरे धीरे. 2022 में तो पूरा बदल जाएगा, पूरा क्रेडिट सिस्टम पे आ जाएगा. तो शायद आपने 4 अलग अलग सब्जेक्ट किया, स्टिल यू बिकम MBA, ऐसा हो जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही चीज में करना है आपको, और फिर 5 अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया और आपको मन किया तो आपको क्रेडिट अर्न कर दिया, सो यू बिकम एन MBA also. So there are so many courses available. आप स्वयं या MOOC में जाइए, Udemy is also there. You have YouTube का है, Learn at Home also is there. EDX, Coursera, you have Canvas, बहुत सारे हैं, आप उस पे जाइए. See whether you really get the hang of it. Then you go for any of the professional certification. No, don't refer Sahil.
लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अभी बुक रेफर करोगे ना आप सो जाओगे. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बुक रेफर कभी कर सकते हो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस सम इश्यू. आपको जो प्रैक्टिकल इश्यू आ रहा है ना, तो बाद में आप उसका फंडामेंटल पढ़ो और देखो क्या हो रहा है. बिकॉज एक W3 स्कूल करके क्या है, आई एम श्योर सबको पता रहेगा W3 स्कूल. तो उसमें क्या होता है, एक साइड आपको डेवलपमेंट करने देता है, यू राइट इट एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको बता देगा कि आपका कोड कैसा है, क्या नहीं. So instead just reading a book, I prefer you read the book, but at the same time go through some of the videos, understand how they are doing the things practically, and then you try out the things. I have a question from Yogesh. He says, sir, in government job, which job is best in IT field for government sector? See, if you look at our government, they are omni. They have a websites also, they have a portal also, they have an app also. They manage an entire Aadhaar card, income tax department, sales tax department, central government, university. So there is an ample. It's not about which field it has. In every field you can get a job in, especially in a government. But as I mentioned, for a government job, of course, you have to go through so many other steps. If you can get through it, whether it's a development, whether it's a quality, whether it's your portals or even a professional certifications like this, or ITIL, Information Technology Infrastructure Library. If you are doing this, again, you have ample of scope, and a lot of big company, they hire a lot of experts, those who has more than foundation course certification. But see, in the government, let me tell you honestly, they are more focused on the basic qualification, and you are able to crack the exam and your interview. ये तीन चीज चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए. But the opportunities in all the fields, even the data analytics also. Even in the data analytics also, your or artificial intelligence, all mobile applications, portals, payment gateways, database administration, everywhere it is, everywhere. You name it, it is there. But योगेश, आपको जो मेन 3 माइल्स जो गोल पोस्ट है उसको आपको बढ़ाना होगा, उस पे जाना पड़ेगा पहले आपको. They need a specific, they have a specific prerequisite. अगर वो आप क्लियर कर सकते हो, then it's okay. What else? योगेश, और एक चीज है, आई एम सॉरी, बट you cannot do like this. सर अच्छा वहां पे सर डेटाबेस में ज्यादा स्कोप है ना, तो मैं डेटाबेस करूंगा. डोंट गो बैक दिस. आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना, आप वही करिए. आप गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथवे. उससे और आपका फील्ड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज यू मे नॉट गेट the same thing what you are looking for as far as the government is concerned. Whereas company को तो आप वही उसी के लिए तो आपको हायर कर रहे हैं. Are you getting the difference, योगेश? Yes, sir.
All right. Anyone? Anything else? Sir, हाँ, बोलिए. actually, I want to know about the server certifications that you told before. Microsoft certification या Red Hat. आप Microsoft का अगर आपको ओपन सोर्स में जाना है Red Hat वाला ले लो. And purely Microsoft हैंडल करना है तो Microsoft. Otherwise, there are few. Juniper Network का भी आता है आपको. And you have there is something called as Cisco का भी आता है. So it all depends again कि आपको कहाँ पे जाना है. Purely application based वाला रहेगा उस पे जाना है, cloud based रहेगा उस पे जाना है, या तो फिर purely open source वाले में जाना है. Okay, sir. Anything else? Do we have more questions, students? I think we are done with all the questions, sir. All right. And I think students have also asked everything they wanted to. So I would like to take my time and like to thank you for coming on board and taking time from your busy schedule. I would like to thank you on behalf of Garwar Institute, American India Foundation, Dell Technologies, and NSTC. It had been a really great pleasure to hear you Thank once you. again, and helping these students to take right paths in their forthcoming futures. I hope it have really helped them and they will make good use. Same here. That's what I'm also thinking. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Take care, everyone. All the best to all my students.